somewhat a waste of money because if you are taking two courses, you should at least invest 1.5 years in studying any of the courses. In fact, New York में campus ही नहीं है, so you get to work outside by reaching out to people in Discord, because in Discord there are channels where subject wise the channels have been created. There were less colleges who offer spring intake. For MH is pretty difficult, but still they can look for the other departments. Hello everyone, welcome to College Dunia Study Abroad. My name is Anshika and today we have with us Nayab Azim. Hi Nayab. Yeah, hi Anshika. Hi. So we are sitting right in front of the graduate school and we have squares in front of us. So we are here at Virginia Tech and I'll be talking to her. So she is a spring graduate, spring student who just came here, and I'm a fall 21 intake. So we have some differences to discuss here and a lot of topics that we talked about we could cover. But usse pehle, could you just begin with introducing yourself? Yeah, sure. So I come from India and I graduated in. I completed my undergrad in 21, and then I had been working at Cognizant for about an year. Okay. So as an IB ACE developer, and right after, like in between of that, thought of coming to US. So my GRE preparation and my IELTS preparations began in the month of December, Okay. 21. So the whole process, like I invested my whole year of 22 in preparing to come to US for the in college application, and rest in preparing, giving the exams and all the visa preparation, everything. So and then I decided. So my journey actually began with deciding which college to apply to, and also before that, which country to go. So Yes. तो या बहुत लोगों को confusion होता है because there's Germany, US, UK, Yeah. बहुत सारा attractive countries है world में जो I think engineers को there's an incentive in working in all of these countries. And I think हम सब लोग सिर्फ काम करने आते हैं, पढ़ाई is just a motive to get the visa to work in all Yeah. of these countries. Correct. So कौन सी countries थी तुम्हारे दिमाग में when you applied? like first कि MBA करूँ या Okay. फिर like masters like in CS ऐसे जाऊँ. But then I decided, okay, since it's not about I want to stick with computer science, so without any reason, without any doubt, I went for masters. And then I decided like which country would be better. So I heard that Germany is like your tuition fee gets like maybe sometimes it's almost zero. Correct. But when I searched about the country's education system, so US comes at the first. And again, at the same time, I heard about that London, so I felt to go. But then again, there's some like cost issue. The job, you don't easily Correct. get the job over there. यूके So का जॉब मार्केट करेंटली काफ़ी बुरा है एंड आई बिलीव वहाँ पे सिर्फ 1 ईयर की मास्टर्स होती है. सो लॉट ऑफ पीपल से कि उनको उस कंट्री से यूज टू होने में टाइम लगा. सो वो 1 साल उनका उसी में निकल जाता है rather than looking for something else. yeah. तो या So that was one of the major reason, because there is only 1 year of course over there, and I knew like you should at least invest 1.5 years in studying any of the courses. So without any doubt, I went for US, and then after that I started to filter out the colleges. So तो हाँ, सबका डिवीजन ये होता है, मतलब कि बोलते हैं कि आई विल गेट इनटू दी सेफ, मॉडरेट और एम्बिशियस. yeah. So depending on your score, can you just tell your score before we? Yeah, so I secured 8 in IELTS and 327 in GRE, Okay, nice. and rest these two exams I think इतना ही enough होता है US Yeah. education के लिए. Yeah. So depending on the score we have, the GPA we hold, हम ऐसा कुछ safe, moderate और ambitious universities बनाते हैं. तो तुम्हारे लिए वो क्या था? Yeah, so depending on the scores, the most ambitious one was the one with George Mason. And Okay, George Mason University. yeah, I guess
I'm trying to recall the Yeah, for colleges. sure. I think Cornell University. Cornell, yeah, sorry. Talking, yeah, George Mason, I don't believe it's a Yeah, special. Yeah, I guess wrong bol di. Cornell. Cornell and University of Washington. Okay. So to be very honest, like I like University of Washington just because of its campus, and I also like the primary reason was that I mean I know that I wasn't supposed to do that, but yeah. So why did you choose VT or over all the colleges you got admit from? So first of all, the very most reason was because of its rank. So it do stand somewhere at 40. Correct. And also the computer science. I heard that it comes under 25th. Under 25 Under rank? 25 rank. Okay. So for the undergrad, I guess so. But still, that makes sense that that if that's so also, then the computer science department is like good. So that was the reason. And second was I heard about the we easily get the part time, Okay. and then the location as well. And rest, I actually like the campus. So if besides the education purpose, this was also my like secondary reason to come here. Correct. I agree on this कि campus बहुत सुंदर है हमारे college का, but on the point saying कि location अच्छी है, I have a second thought on this क्योंकि if you're in Boston, California, although I know वहाँ living बहुत expensive है, but you have startup culture वहाँ पे. अभी ये हमारा पूरा college मतलब पूरा कैंपस ही कॉलेज से ही रिलेटेड और कुछ है ही नहीं हमारे पास करने के लिए. इंडियन स्टोर भी एक मिलता है हमारे यहाँ पे. सो आई थिंक कि वी कुड हैव मोर फैसिलिटीज फॉर क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स यहाँ पे ज़्यादा हैं तो उस हिसाब से आई थिंक फैसिलिटीज थोड़ी कम है. एक ही इंडियन रेस्टोरेंट बनाना, एक ही इंडियन शॉप बनाना थोड़ा सही नहीं है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए. बट या ओवरऑल कैंपस लाइफ तो काफ़ी अच्छी है. हाँ, और लाइक मैं अगर फैक्टर्स देखी थी, लाइक आई रीच्ड आउट टू लिंक्डइन एंड आस्क्ड पीपल लाइक क्या डिफरेंस है लाइक एजुकेशन से उसके अलावा. तो उसमें लाइक लोगों ने कहा था कि कॉस्ट ऑफ लिविंग लाइक अकॉर्डिंग टू द अपार्टमेंट प्राइस कि यहाँ पे कम है, और बाकी जगह जैसे न्यूयॉर्क वगैरह में है. इवन इनफैक्ट न्यूयॉर्क में कैंपस ही नहीं है, सो यू गेट टू वर्क आउटसाइड द कैंपस and that is pretty difficult, and also the cost. तो उस हिसाब से मैं अगर like when I differentiated between the living cost of living and the part time amount we get, so उस रिस्पेक्ट से मैं देखी तो फिर मुझे वर्जीनिया सबसे सटल दिखा बिकॉज पार्ट टाइम ईजिली मिल जाते हैं. सेकेंडली कि कैंपस है तो फिर, और दूसरी की अपार्टमेंट भी गेट अराउंड द कैंपस एंड वो भी लेस ऑफ कॉस्ट में. तो सेफर है आई बिलीव न्यूयॉर्क और ये बड़ी सिटीज में जाओ तो थोड़ा सेफ्टी कम लगती है. दो दे हैव देयर अपसाइड्स बट द सेम टाइम थ्रू आउट योर कॉलेज जर्नी somehow it becomes like this to be more suitable. I don't know. But yeah. So one thing you pointed out before the interview about the course selection. Yeah. If you want to talk more about it. Okay, so that was the most confusing time which we ever come across back in India. So before coming here, so there was the set of courses we had to choose. But there were many factors we were actually looking so for. Just as a pre-context to what Nayab is talking about, हमारे यहाँ पे ऐसा होता है. I think most US universities में ऐसा होता है कि before we come here, before we start a semester, हमें courses pick करने होते हैं. We have to take the classes. I mean, course select करके we have to select them online. तो बहुत लोगों को पहली बात ये पता ही नहीं होता है कि उनको कोर्स रजिस्ट्रेशन यहाँ के आने से पहले करना होता है. And second thing, what she's saying, you can continue now. Yeah, in fact, I didn't know that we have to do in such a way. Yeah. So, we were given the courses list. We were given the links, and we had to go through all those courses. And there were certain criteria to fulfill, which was to have 2 offline courses. I'm sorry, I guess minimum of 1 online course. So we had this criteria of there were certain criteria to fulfill, which and one of them was to have
minimum of 2 offline courses. So out of 4 you have to have take like 2 offline courses, and then rest you could take online courses, like the rest to fulfill like 4. So this was thing, so we had to keep this in mind. And rest was key, which courses to take. We don't know which what type of professor we're gonna get, and which would be more beneficial for our job perspective. So there were like a lot of confusion going on. I actually, like, along with my friends, we actually tackled this issue by reaching out to people in discords, because there in discord there are channels where subject wise channels have been created. So specifically if you want to know about that subject, you could go and ping like how is the subject, how's the which professor, which who all is taking the course. So accordingly we could go, and in during that time itself, like, I came across a person who actually gave me a link which is called Grade Sheet. So which was really helpful, because there you could just go and check for the subject code, and that will give the like what was the grade for the past years, and with the professor. So we could actually acknowledge, okay, this professor gives you around the mean value is around 3.6, 3.5. So we could figure out, like, okay, which professor would be somewhat ease on us. करेक्ट. So that आई really थिंक हाँ, helped. ग्रेड मैटर करता है, क्योंकि हम सब लोग 4 GPA सोचते हैं कि सबको 4 GPA लेके आना है, बट आई डोंट थिंक हाँ जॉब अप्लाई करते हुए वो मैटर करता है. बट स्टिल दैट्स अनदर टॉपिक. बट हाँ, एज यू मेंशन, मैंने भी कोर्स सिलेक्शन को बहुत ही लाइटली लिया था. रात में कोर्स सिलेक्शन था, मैं मस्त 2 दिन बाद उसको खोल रही हूँ, एंड टिल देन आई फाइंड कि ऑलमोस्ट सारे कोर्सेज फुल हो रखे हैं. सो आई हैड नो अदर ऑप्शन बट टू चूज दी ओनली 2-3 कोर्सेज जो बचे थे. मैंने सब में रजिस्टर कर दिया, सेइंग कि एक ड्रॉप कर रहे हैं, वहाँ पे जाके देखेंगे, ड्रॉप कर देंगे. बट या, दिस इज़ वन थिंग टू पॉइंट आउट कि यूएस आने से पहले ये सब सोच के रखना होता है. एंड जो डिस्कॉर्ड चैनल बना है, तब मुझे नहीं पता था उसका. आई थिंक दैट्स ग्रेट कि तुम्हें मालूम था उसके बारे में, और ग्रेड्स के बारे में भी मालूम था. आई नेवर चेक दोज थिंग्स आउट. तो आई थिंक दैट वाज अ केयरलेस बिट. बट या, पीपल शुड एक्चुअली look into it, because बहुत प्रोफेसर्स के कोर्सेज बहुत मुश्किल होते हैं. रेट माई प्रोफेसर इज ऑल्सो नाइस सोर्स टू सी कि ये प्रोफेसर कैसा पढ़ाता है. आई मीन, अनोनिमस लोगों के वो होते हैं रिव्यूज, बट देन यू गेट टू नो कि पर्सन कैसा है, कोर्स कितना मुश्किल होने वाला है. करेक्ट. ओके, सो अब अपार्टमेंट सर्च पे आते हैं. हाउ डिड यू फाइंड एन अपार्टमेंट? Okay, so that was really difficult, because every time you have to look in the Facebook, and like Facebook scroll करते करते रात हो जाते थे. ये अपार्टमेंट में कभी कुछ मिलते, ये अपार्टमेंट में. एंड मोर देन कि मुझे अपने फ्रेंड के साथ में शेयर करनी थी. सो उसके साथ मैं देख रही हूँ, तो देयर आर मेनी अपार्टमेंट विच डजंट अलाउ दैट. सो आई कैन एक्चुअली point out कि which all apartment do allow 2 people to stay in a room. That is Smith's Landing and Heatwood. As of now I know these things. Okay. But जो बहुत common आपको मिलेंगे जो कि UT होते हैं, and जो near to college which people usually prefer, and you will be seeing a lot of people staying there, वो नहीं allow करते 2 people. So if you are planning, so go with the one which actually allows, and you could actually find, because सेम थिंग कि वो डिवाइड कर देते हैं इफ यू आर रिगार्डलेस ऑफ द मैटर की प्राइवेसी नहीं रहेगी. बट ठीक है. तो फिर मोस्टली फेसबुक से, एंड दूसरी डिस्कॉर्ड में भी एक हाउसिंग है, तो वहाँ पर से भी मिले. एंड वन मोर कि सबसे ज़्यादा मुझे सबसे इजीली अवेलेबिलिटी दिखती थी ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में. Correct. जो कि हमें सीनियर्स ने ऐड किया था, जो कि फॉल या पहले के हैं, वो हमें स्प्रिंग वालों को ऐड किया, सो दैट बिकॉज बार्डर से उनको देना, मुझे लेना है, तो वो उस हिसाब से काम कर रहे थे. करेक्ट. तो हाँ, ये आई थिंक वीटी का एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि देयर आर अ लॉट ऑफ इंडियन ग्रुप्स इन जनरल, जो हम जैसे एडमिट मिलता है, आई डोंट नो कहाँ से हम उस ग्रुप में ऐड ऑन हो जाते हैं, बट वी नो दैट ऑल स्प्रिंग या जो भी अपना इंटेक है उसके बहुत सारे लोग उधर पे होते हैं. सो या, आई बिलीव उससे बहुत सारी हेल्प होती है, और बहुत लोग सबलीज भी करते हैं जो लोग उस पर पोस्ट करते हैं. तो और आइटम्स जैसे बेडिंग और से जो भी घर का थोड़ा बहुत आइटम है, इफ समबडी सेलिंग टेबल चेयर, ये बेसिक चीज़ें, तो वो भी वहाँ से बहुत लोगों को मिलता है. बिकॉज स्प्रिंग इज नॉट द जेनेरिक टर्म जो लोग आते हैं, यूजली लोग बहुत फॉल में ज़्यादा आते हैं. सो कमिंग टू दिस स्प्रिंग एंड फॉल थिंग, तुम स्प्रिंग में आए, मैं फॉल में आई हूँ, सो वी कैन टॉक अबाउट द डिफरेंसेस एंड व्हाट डू यू थिंक अबाउट कमिंग हियर इन स्प्रिंग. Okay, so
I actually felt few downside of coming in spring because I saw that first of all at the very first stage ki there were less colleges who offer spring Spring intake. intake, and secondly ki when I had to choose a courses, so found that okay, there are so many courses which are being like good courses which are being offered in fall. So we got actually, so if we are coming in spring, so we get two springs and most of the courses are offered in the fall semester, so we get less courses because we we actually studying two spring. 2 स्प्रिंग और 1 फॉल कर रहे हो तुम, Yeah. बल्कि हम जो फॉल में आए आई थिंक हम लोग 2 फॉल एंड 1 स्प्रिंग कर रहे हैं. मैंने तो 2 स्प्रिंग किया बट एनीवेज बिकॉज आई कंप्लीटेड इन द जेनेरिक 2 ईयर थिंग, बट स्प्रिंग वाले लोग आई थिंक प्रेफर करते हैं 1.5 ईयर्स में करना बिकॉज दे हैव द समर, दे कैन नॉट इंटर्न ओवर द समर. Yeah. आई थिंक ये भी एक डाउन साइड मुझे लगता है कि स्प्रिंग और फॉल में कि तुम लोग इंटर्नशिप, बहुत सारे कॉलेजेस है डे 1 CPT या OPT कुछ क्लॉज होता है उनके यहाँ पे कि यू कैन इंटर्न, बट VT में यू कैन नॉट do an internship unless you are enrolled for 2 full semesters as a full-time student. Yeah, we need to complete I guess 9 months हाँ, correct. being in US. Yeah, हाँ, so तो वो 2 semester I guess that is the primary downside of coming in spring. करेक्ट. बट आई थिंक मेरे को एक स्प्रिंग का ये बहुत फ़ायदा लगता है कि जब हम फॉल में आते हैं पहले हमको इंटर्नशिप भी देखना है बिकॉज इफ़ यू आर इंटर्निंग इन मे यू हैव टू स्टार्ट सर्चिंग इन फॉल एनीवेज. Yeah. तो हमें जब हम आए तो हमें पहले वो चेंज US से इंडिया वाला, ठीक है, कोर्स में चेंज, हाउसिंग में सब कुछ चेंज, एंड देन वी आर ऑल्सो लुकिंग फॉर एन इंटर्नशिप. तुम्हारा क्या है, तुम स्प्रिंग में आराम से अपना कोर्स शुरू करो, सेटल अप हो, एंड देन यू स्टार्ट लुकिंग ओवर, मतलब पार्ट टाइम करो समर में, एंड देन मतलब पैसों के टर्म्स में से कि शायद फॉल में आने वाले लोग ने थोड़ा ज़्यादा कमाया होगा, बट इन अ ईयर और 2 कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है. आई थिंक 1 महीना ज़्यादा काम करके. तो हाँ, ये एक प्लस पॉइंट लगता है मुझे. एंड द अदर प्लस पॉइंट आई बिलीव इज कि तुम जल्दी कोर्स खत्म कर सकते हो क्योंकि तुम समर में कोर्स कंप्लीट कर सकते हो एक पार्ट टाइम के साथ. Yeah, that could be possible, but at the same time we see that there are very less courses being offered in summer. करेक्ट. So that's somewhat a waste of money because you are taking, if you are taking 2 courses, hardly you could take 2 courses if you really like the most prominent ones if you're considering. So and then still you're paying 3,000 as the exam fee. करेक्ट. So- हाँ, तो ये भी एक पॉइंट है कि हम जब सिर्फ एक क्रेडिट लेते हैं तो वी पे पर क्रेडिट फी अगेंस्ट द per semester fee, तो it has some add-ons which is not there when you do 3 courses or 4 courses. 3+ courses के लिए the fee is same. Yeah. So I think लोग बस 4 courses लेते हैं तो फ़ायदा होता है, बट 4 courses का लोड बहुत ज़्यादा होता है. Yeah. So तुम्हें कोर्स लोड कैसा लग रहा है? This is your first semester. Okay, so in the first sem, it was kind of chill in the beginning because DA we weren't getting any assignments. Then SE it was going like very subtle. Like we got a project we had to do, but and also AML the assignment the same thing. So can you just tell the full forms of the courses that you're taking? Yeah, sure. So SE is software engineering, DA is data analytics, and AML is advanced machine learning. So coming to now, if saying ki like in the by the like start of this last month of the semester, it's really difficult now, like it's getting really occupied because we got a lot of assignments due, and along with that we have to complete our project. So we do assignments or we invest our time in the project, and there we and also it's not like we know everything what to study and like how to build the project. We also have to study that, so it's like very difficult now. I feel. करेक्ट. स्टार्टिंग ऑफ द सेमेस्टर आई थिंक हम लोग थोड़ा एक खुद ही में रहते हैं कि चलो अभी तो पूरा सेमेस्टर बाकी है, बट आई थिंक US का स्टडी सिस्टम थोड़ा डिफरेंट है कि हम पर वीक असाइनमेंट्स करते हैं, पर वीक प्रोजेक्ट प्रोग्रेस लेते हैं रादर देन डूइंग इट ऑल इन द एंड. Yeah. इंडिया में क्या होता था, हमारा एक ही एग्जाम होता था, कभी वो होता था यूनिट टेस्ट होते थे आई Yeah. थिंक, और वो 25 मार्क्स होते थे, बट मेजोरिटी हम एंड के लिए छोड़ते थे. बट यहाँ पे आई थिंक इवनली डिवाइडेड है थ्रू आउट 25 एंड देन एंड में समटाइम्स इट्स 30 और So this would be the lesson ki
we could have actually divided in parts. So next, hopefully in the next fall, like the next semester fall, I would do that. I don't want to take the load in the end. करेक्ट. आई थिंक हमारे तो आई थिंक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ही था कि एक मेन प्रोजेक्ट एंड में करना होता है. बाकी वेब डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट, वट एवर कोर्सेज हैव टेकन, वो खुद ही ऐसे स्ट्रक्चर्ड होते हैं कि तुम खुद ही यू आर मेड टू डू इतना पार्ट इतने सेमेस्टर में, इतना पार्ट इतने सेमेस्टर में. तो स्ट्रक्चर ही ऐसा है, तुम्हें कुछ खुद नहीं करना. असाइनमेंट डेडलाइन ये है तो तुम्हें तब तक करनी है. सो देयर आर लॉट ऑफ प्लस एंड नेगेटिव्स. एटलीस्ट यू हैव एन ऑप्शन टू डू अ को-op. वो तुम्हारे पे ओपन है, हमारे टाइम पे था नहीं ओपन. बस दैट्स अ पॉइंटर टू मेक. बहुत सारी यूनिवर्सिटीज अलाउ करते हैं. आई थिंक एनयू इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस यूनिवर्सिटीज जो अपने को-op के लिए बहुत फेमस है. During the college selection, I heard its main feature was that कि वो co-op खुद ही प्रोवाइड करते, उनके खुद के पोर्टल है जहाँ से वो फिल्टर आउट कर देते हैं NU स्टूडेंट्स के लिए. So yeah, for that sake, there are so many people who are opting for NU. करेक्ट. आई थिंक खुद के सब कॉलेजेस के पर्क्स एंड कॉन्स होते हैं, प्रोज एंड कॉन्स हर कॉलेज के होते हैं. तो आई बिलीव सब कुछ मेजर करके both of us are here and many of you Yeah. would be here. So yeah, is there anything else which you would like to point out? कुछ चीज़ जो शेयर करना चाहते हो? Okay, so there will be times when you will get multiple admits from colleges, and you will be confused between choosing which, choosing them. So there will be fact like some university would have less fee, but some would be way double of that. But I think you should give priority the quality of the university, because there will be some demerits in there itself, there also, because the part-time thing, you need to consider a lot many things. If you're just considering the fee structure, but also at the same time you need to consider other factors as well, the part-time, the location, and also how's the department you going to. Correct. Before you were talking about University of Buffalo Yeah. and VT, correct. Yeah. So what differences did you find? मतलब Buffalo की फीस कम है क्या? Yeah, it is like half of the अच्छा, VTs. ठीक है. But there people very, they have to do a lot of effort to get the part time. So I met a person who had been there for 7 months, still didn't have any part time. Okay. So he was he had been using the living expense from his loan amount. So that makes the same thing. If you are earning here, but you're earning here and your fees is high, there you ain't earning, but your fees but you are taking the money Yes, from your yes. loan. हाँ, So- anyways बराबर ही हो जाता है. Yeah. मतलब अगर पार्ट टाइम मिल रहा है तो you can take out most of your living expenses. I believe कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होती. जस्ट द फी Yeah. जो पे होती है. करेक्ट. दैट मेक्स सेंस. आई मीन पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज बहुत मैटर करती है. सो तुम्हारे बैच में कितने लोग पार्ट टाइम कर रहे हैं और क्या पार्ट टाइम अवेलेबल है इस टाइम पे? So I guess सब कोई पार्ट टाइम कर रहे हैं, कोई इतना अमीर नहीं है यहाँ पे. तो वो सब पार्ट टाइम कर रहे हैं. तो उसमें सबसे ज़्यादा मेजर पार्ट टाइम जॉब जो है वो डाइनिंग की है, बिकॉज इट पेज रियली वेल. $15 जो कम्पेरेटली हर किसी से ज़्यादा है. एंड ऑल्सो इट गिव्स यू मील पर, जो कि मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है. एंड सेकेंड वाले होंगे जो कि ग्रेडर वाले होते हैं, जो कि लेस देते हैं 12, बट उसकी पर्क ये है कि you get to work less hours, but you still can fill out 20 hours, and Okay. you get the amount of that. And also obviously it's kind of chill job, because हाँ. you don't have to stand Dining में थोड़ा खड़ा होना है, unlike serve dining, करना you just have to sit and grade, and it's pretty easier. Got it. एंड सेकेंड होंगे जो कि हाउसिंग वाले होते हैं, जैसे डेस्क जॉब हुए, फ्रंट डेस्क जॉब्स, एंड ऑल्सो जो कि डॉम्स में अवेलेबल होते हैं. स्टिल उनके भी पे लेस है. आई गेस मैक्स उनके 14 होंगे. Okay. सो दीज आर द मेजर जॉब रोल्स अवेलेबल इन वीडियो.
because MN students cannot get a TA or an RA opportunity in the computer science department. So MN's department का यहाँ पे एक बहुत बड़ा flaw है, I would say. Yeah. That they don't. I have a research assistantship here, but I'm not in the CS department. So दूसरे department में जाके same चीज़ अपना resume sell करना थोड़ा मुश्किल है, और उनके डिपार्टमेंट में खुद के बच्चे भी होते हैं, हमारे डिपार्टमेंट हम ही को बाहर निकाल रहा है एंड देर एक्सपेक्टिंग कि दूसरे डिपार्टमेंट हमें जॉब देंगे. सो ये एक नेगेटिव पॉइंट है. बट या लॉट ऑफ पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज आई बिलीव तुम्हारे बैच के लोग कर रहे हैं, क्योंकि मेरे बैच में जनरली सब लोग डाइनिंग ही कर रहे थे. उसके अलावा मैंने कुछ सुना ही नहीं है डाइनिंग के अलावा. वॉट एवर जॉब्स यू सेड वॉज रियली न्यू फॉर मी एज वेल. या ऑल्सो मेरे को ये भी लगता है कि जो लोग स्प्रिंग में आते हैं वो लोग फॉल से एक और मुझे डिफरेंस अच्छा लगा यहाँ पे. सो देर आर सम लिस्टिंग्स जिसमें हम एडेड है विच टेल्स कि यहाँ पे आ रहे अपॉर्चुनिटीज़ है या टी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन है और एनी पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज़ ओपन. सो आई थिंक उन ईमेल्स पे फॉलो अप करना एंड स्प्रिंग स्टूडेंट्स गेट अ प्रेफरेंस ओवर द अदर्स. आई मीन दे हैव मोर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि तुम ओवर द समर यहीं पे रह रहे हो, तुम सब पे देख लोगे कि कौन आ रहे टी दे रहा है. Yeah. और समर में बहुत लोग अपॉर्चुनिटी देते हैं विच कंटिन्यूज ओवर टू फॉल एंड नेक्स्ट टर्म ऑल्सो, क्योंकि उनके पास खुद के बच्चे नहीं होते, वो लोग खुद इंटर्नशिप करने जाते हैं. सो या प्रॉबेबली इसका यूज हो सकता है, बट देयर इज वन लिस्टिंग जो कि अपॉर्चुनिटीज देता है. आई थिंक you'd be in that list already. Yeah, I guess so. वो Surface Lauren. Oh yeah. Surface Lauren is the one I think जो email करती है usually. Yes. And handshake से भी we could actually find out. Yeah. There is one job that I did in my first semester. वो स्टेडियम पे जॉब था, जो यहाँ पे एक ही स्टेडियम में होगी स्टेडियम. सो दे पेड लाइक $13, जो डाइनिंग से कम था, बट वो 8 आवर्स कंटिन्यूस काम करना होता था. ठीक है, तो कभी फुटबॉल मैच है तो एक बार चले गए, पूरा 8 घंटे काम किया, बहुत पैसे मिल गए. एंड दे ऑल्सो डिड कि इफ़ यू वर्क लाइक 4 और 5 मैचेस कंटिन्यूस, वो $500 एज बोनस देते थे. Oh. तो ये सही लगता था, बिकॉज यू डोंट हैव टू गो ऑल इन द वीक. सिर्फ सैटरडे जाओ, शाम को खत्म करो, संडे स्लीप इट, खत्म हो जाएगा वो. बिकॉज आई थिंक डाइनिंग जॉब और ये स्टैंडिंग जॉब में थोड़ा ज़्यादा थकान होती है, उसके बाद असाइनमेंट करने की एनर्जी तो नहीं ही रहती है. तो फिर आई वर्क देयर और मुझे सही भी लगा था. $500 तुम्हें सिर्फ कंटिन्यूस काम करने के लिए मिल रहे हैं इज रियली नाइस. That's really attractive. या आई थिंक तुम लोगों को भी वो अपॉर्चुनिटी ओपन होगा, बट यहाँ पे ज़्यादा फुटबॉल मैचेस हैपन ड्यूरिंग द फॉल सेमेस्टर. Okay. So during fall you could look into it. Yeah, would look. Yeah. Is there any advice or suggestions for people who are coming to look into Virginia Tech particularly? So would suggest ki if they are like for MH is pretty difficult, but still they can look for the other departments. And for the masters, they should actually reach out to the professors for the like for the RA and other. Correct. MS students सब funded होते हैं, but they just need to find the right advisor. बहुत लोग को advisor first semester में नहीं मिलता because they've not decided कि क्या research करना है उनको. Yes, and also ki you could actually attend GLC. There are like a lot of events will be going on like throughout the year. So it's So better. ये GLC हमारे पीछे exactly. They have a coffee hour on Thursday and every Wednesday also they organize. I think 2 days a week they have some games or something. They keep messaging और बहुत लोग आते हैं वहाँ पे. So connection के लिए भी अच्छा है. So I think in the like beginning of your sem, you should invest your time going to events. That's how you make contacts with people and interact with others. So because you get to know a lot many things which you won't be knowing. Correct. So that's the thing when if you come to VT, and rest I think is enough to like enough information available via like if you reach out to people in LinkedIn or the WhatsApp group which usually people create. Correct. So So LinkedIn advice, one LinkedIn advice I would like to give is do not send messages ऐसे randomly किसी को भी. Be specific. जैसे इसने बोला कि you should research first before messaging anyone. I see a lot of LinkedIn messages but सब पे reply नहीं करने का time है किसी के पास. And when you get into the schedule, तुम्हें नहीं कोई बच्चा अगर बोलेगा सिर्फ दे जस्ट नीड टू आस्क समथिंग रिगार्डिंग VT, आई वुडंट रिप्लाई. अगर कुछ स्पेसिफिक पूछो कि अपार्टमेंट से रिलेटेड पूछना है या हाउ इज दिस सब्जेक्ट, देन पीपल विल रिप्लाई. बट आई थिंक इनिशियल रिसर्च अपने आप करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू डोंट वांट टू साउंड स्टूपिड इन फ्रंट ऑफ एनीवन एल्स. वो जो खुद भी बिजी है, मतलब वो खुद इंसान बिजी है, तुम भी बिजी हो, जो तुम्हें इंटरनेट पे सर्च करके मिल जाएगा. व्हाई डू यू वांट टू
You should have a specific question for if did you choose this course, if you know about this course. Correct. Because that those things you cannot get from internet. So you should know what question you should be asking. And yeah, like the valid questions, they should be Correct. valid question in points, and also organize them well so that the people whoever is reading would be easier for them to go through the Yeah, message. that's great advice. Thank you, Nayab. It was great talking to you today. You too. Bye bye.